Hello friends, warm welcome again. Our This is the continue lecture. Our bookkeeping and accountancy's fifth lecture. Last video I have started important terms related to in these chapters. That means when you solve the issue of shares problem. So in that time, in which term is important? Yeah. For example, last video I explained you under a subscription या over subscription. Okay. In this lecture, I explain you calls in arrears and calls in advance. Okay. What's the differences between? See one by one. First one, calls in arrears. If the company accepts the application and allows the shares to the person, he becomes a shareholder. Okay. So that means when purchase the shares, so that person is called the shareholder. So that shareholder accept the application and allowed the shares. Okay. So that means the shareholder, that person is liable to pay the entire amount of shares. So that means if XYZ person purchase the shares, for example, 10 purchase 10 shares, so that means that shareholders liable to pay the entire amount of shares. Entire amount of shares means each and every application money, already I told you, then allotment money, first call, yeah, second call, yeah, last call, third call. Okay. But in case that shareholder fail, so that may not pay the amount of allotment money, yeah, calls on shares. So here by him the unpaid amount is known as calls in arrears. For example, one person pay the into that, for example 100 rupees पे करना है, उसमें से उन्हें एप्लीकेशन मनी पे किया है बट नॉट पे द अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर्स, या मे बी 50% पे and 50% not paid. So that amount means which one? Unpaid amount is known as calls in arrears. समझ में आया? Okay. So this is a amount due but not collected from the shareholders. यानी कि शेयर होल्डर ने अगर 50% अमाउंट पे किया है, 50% रिमेनिंग है, उसने ड्यूज है, so that amount is called the calls in arrears. Remember, the calls in arrears account has debit balance, which is shown as a deduction from the paid up share capital on liability side of balance sheet. It is also known as unpaid calls. Okay. So this is the journal entry. Bank account debit, calls in arrears account debit to equity share first and final call account. Narration also the must when you write the journal entry. Next term is the calls in advance. The amount paid by the shareholder of a company before the particular call is made is known as calls in advance. Calls in advance. Last slide I explain you when the shareholder not paid the amount, but here it is already paid before the calls in advance. Calls means first call, after the allotment immediately pay the each and every amount. So that is called the calls in advance. So what's the meaning of calls in advance? The amount paid by the shareholders of a company before the particular calls in is made known as the calls in advance. It is the liability of the company and should be transferred to calls in advance account. For example, Ganesh Limited Company issues 10,000 shares of Chinese at rupees 12 payable as. So that means here it is the premium amount, 10 rupees ka share hai, face value is 10 and 12
means that means the sell out किया है 12 rupees में, so that means 2 rupees is the premium amount. Okay, so here it is given the application amount, allotment amount and first and final call. But main important thing is this one. Which one? Here it is given Kartikeya, a holder of 400 shares, see here, made the full payment at the time of allotment. यानी कि कार्तिकेय इज अ शेयर होल्डर्स, उन्होंने क्या किया है, ये जो है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी के बाद फाइनल कॉल आता है, लेकिन उससे पहले ही उसने क्या किया है, पे दी फुल पेमेंट, उसने पहले ही बिफोर ही उन्होंने क्या किया है, पेड किया है, सो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सो दिस इज कॉल्ड द कॉल्स इन एडवांस. समझ में आ रहा है? कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स में क्या डिफरेंस है? Calls in arrears may be that shareholder not pay the amount of maybe allotment money या first or final call. But here it is that person, that shareholders paid before the amount. Particular calls may be first call या second call या third call before pay the amount at the time of allotment या maybe final first call. Okay. So, this is the example, same example, here it is given the journal entry, okay. Mr. Ganesh Limited company issues 10,000 shares of 10 each at rupees 12 payable as 3 on application, rupees 5 on allotment with premium and 4 on first and final call. So here it is important is the Kartikeya, a holder of 400 shares, made the full payment at the time of allotment. Okay. So that means here it is, this is the journal entry, bank account debit, application money and allotment ka already I told you last video. This is the main important entry only for the calls in advance. Okay. Then after next lecture, I explain you each and every adjustment and each and every journal entry. But here it is the how to write the calls in advance journal entry. This is the journal entry, bank account debit 41,600. Okay. And share allotment, that means the 40,000. 40,000 means here it is given the 10,000 shares and 4,000 is the first and final call. Okay, so that means 40,000 amount is the amount of that one. Okay, so here it is. See here. No, here it is given the Kartikeya holder for in the time of allotment. Okay, so allotment money is here it is. For example, listen, 5, 4 and 3 कितना हुआ? 12 हुआ. लेकिन उसमें से अपने को क्या करना है, यहाँ पर विद प्रीमियम है. तो कितना हुआ देखो, तो इसमें यानी कि 10,000 शेयर्स. See here, allotment money on 8,000 equity shares into 5. Okay, यानी कि listen, यहाँ पर आगे का जो हाफ पोर्शन है यहाँ पर रह गया है, यानी कि एडजस्टमेंट में था वो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कितना अलॉटमेंट हुआ था, 8,000 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट हुए थे. So 8,000 into 5 on allotment, so that means 40,000 is the allotment money. यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 शेयर क्या किया है, अलाउट किया है. So that means here it is 40,000 is the allotment money. Yes, समझ में आ रहा है? अभी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 41,600 जो है, ये कैसे आया है? 40,000 इसमें अलॉटमेंट मनी है प्लस कॉल्स इन एडवांस.
ऑलरेडी उसने 400 शेयर्स का जो है 400 इंटू 4 मीन्स अलॉटमेंट मनी फाइनल कॉल के पहले का जो अमाउंट है उसने क्या किया है ऑलरेडी रिसीव किया है 400 इंटू 4 देखो फाइनल कॉल इंटू 400 शेयर्स तो कितना हुआ 1600 उसने ऑलरेडी बिफोर ही पे किया है तो बिफोर पे किया है सो इसलिए अभी क्या हुआ बैंक में अपने को 41,600 क्या हुआ है जमा हुआ है सो दैट मीन्स शेयर अलॉटमेंट अमाउंट इज 40,000 एंड कॉल्स इन एडवांस 1,600 समझ में आ रहा है ओके 400 यहाँ पर देखो being shares allotment money on 8,000 equity shares 5 per share and first and final call 400 shares rupees 4 per share received. So that means what's the journal entry? Bank account debit to share allotment account to calls in advance. Okay? कॉल्स इन एडवांस उन्होंने पहले बिफोर 1600 पे किया है मिस्टर कार्तिकेयन इज इट क्लियर ना नेक्स्ट टर्म इज इम्पोर्टेंट प्रोराटा या प्रोपोर्शनलेट अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मीन्स व्हाट शेयर्स could be allotted if number of shares to be allotted is less than so that means each applicant gets less share than applied यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको पूरा नहीं मिलेगा मे बी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा तो कितना होगा मे बी 80 उसको अलाउड किया होगा ओके सो प्रोपोर्शनेट शेयर्स मीन्स समझ में आया कुड बी allotted if number of shares to be allotted is less than so that means applicant means shareholder gets less shares than applied इसमें क्या याद रखना है कि applicant get yes less share than apply जितने भी अप्लाई किया है उसे से उसमें उसको कितना प्रोपोर्शनेट जो भी दिया है आपको एग्जाम में दिया जाएगा प्रॉब्लम में दिया जाता है जितना भी उसको अलाउडेड किया है कितना भी उसने यानी कि सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स उसको कितना अलाउड किया है ये इम्पोर्टेंट है उसने कितना भी अप्लाई किया है कि मे बी 100 बट उसको कितना अलाउड हुआ है 80 ओके सो अल्टरनेटिवली सम एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड बराबर है कि नहीं जो अपने को अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मोर देन एप्लीकेशन आया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा उसमें से कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट करना पड़ेगा हाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मोर देन 1000 अप्लाई किया है तो उसको इतना नहीं दे सकते ना सबको एप्लीकेशन सबको शेयर्स मिलना चाहिए इसलिए क्या किया जाता है उसको प्रोपोर्शनेटली अलाउड किया जाता है जैसे कि किसी को 50 दिया 60 दिया 80 दिया उसके हिसाब से ओके सो दैट मीन्स अदर देन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड with refund of full money. Already last video I explained you how to refund that money. Okay, application money. To some whole shares apply would be allotted to some proportionate. This is the journal entry. Share application account debit to share allotment. Yeah, maybe share application account debit to share capital to share allotment account. Okay. Next important term is the forfeiture of shares. Forfeiture of shares means what? Means cancellation of shares allotted to a particular shareholders. यानी कि कोई shareholders के shares क्या किया जाता है कैंसल किया जाता है if shareholder does not respond if shareholder does not respond to reminders and to fail to pay money, then the directors can forfeit his share as per the provision of Article of Association of a Company. यानी कि forfeiture of shares में क्या आपको पता चला if the shareholder fail to pay allotment or call money or both अगर कोई शेयर होल्डर्स
शेयर का जो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट सेकेंड कॉल या लास्ट कॉल है, उसमें उसने फॉर एग्जाम्पल दैट शेयर होल्डर फेल, उसने पे नहीं किया है, या मे बी अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, या फिर फर्स्ट या सेकेंड कॉल या लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, ओके, या बोथ. So that time the company sends reminder to the shareholder. फर्स्ट क्या करती है कंपनी, पहले रिमाइंडर करती है शेयर होल्डर्स को, ओके. सो इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू रिमाइंडर्स, अगर फिर भी उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, फेल टू पे मनी, देन द डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट हिज शेयर्स. देखो, पहले शेयर होल्डर्स को रिमाइंड किया जाता है, अगेन एंड अगेन लेटर दिया जाता है, रिमाइंडर लेटर, कि आपको आपके फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट मनी आपने पे नहीं किया है, जल्दी पे करो. लेकिन फिर भी डज नॉट रिस्पॉन्ड दैट शेयर होल्डर, सो इन दैट टाइम डायरेक्टर्स कैन फॉरफिट मीन जब्त करने, अपने पास वो शेयर्स क्या ले लेते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी. So when shares are forfeited, the share capital is debited with the amount called up to the date of forfeiture in respect of shares forfeited. Okay? And credit, यानी कि जो shares का amount उन्होंने pay नहीं किया है, so that means this is the loss of that company. So of course that amount या account should be debited. But credit will be given to share forfeiture account with the amount already received. जो उसने अमाउंट ऑलरेडी पे किया है, जो कंपनी ने रिसीव किया है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जो अमाउंट फॉरफीचर है उसको डेबिट किया जाता है. ओके. द रिस्पेक्टिव अनपेड कॉल्स इन अकाउंट और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, इफ अनपेड calls have already been transferred to calls in arrears account. तो किसके अकाउंट में जाता है वो, calls in arrears. So in that time, what's the journal entry? Share capital account debit to share forfeited account and to calls in arrears account. ये समझ में आई है? Term बहुत important है. When you solve the problem of issue of shares in capital in that our company's account, so in that time each and every journal entry is important. Remember. For example, application money transfer, then application received. Okay, so that means first application allotment, first call, second. In that between, if you are given in the problem forfeiture, या calls in advance या calls in arrears, so remember these all the journal entry. Next video I explain you how to write that question problem of that journal entry also. Okay, so all of you understood what's the meaning of calls in arrears, calls in advance, both are the different? Yes, calls in arrears, yes, calls in advance, and pro rata, and then last one forfeiture of shares. Okay, is it clear now? Next lecture I explain you with the problem. Okay, chalo, bye.